Hi everyone, I hope you are doing great. My name is Anju and welcome to my channel. In this video, I am going to show you all how I made this trouser for myself, and if you're new, please subscribe my channel and also share it with your friends. To make this trouser, you can go for any kind of fabric, but I suggest you to avoid that fabric which have more tendency to frizz. And yeah, it is really simple to make, and I hope that you can get what I am trying to show you all. So please, if you have any kind of doubt, then you can ask me in the comment section below. तो सबसे पहले तो I am going to trace out the front side of my pant, and don't forget to leave half inch of fabric for the seam allowance. And it is always good to have extra fabric. अगर कम ले लेगा तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा. सो लेटर ऑन व्हेन यू हैव एक्स्ट्रा फैब्रिक तो आप उस पर काम कर सकते हैं. तो दैट्स वाई it is always good to take extra more when you cut your fabric. So now I have this two piece for the front side, and for the repeat the same process for the back side as well. But this time make sure ये जो elastic है, when you trace out you pull the elastic and then you trace it out, because elastic जो है ना कि fabric को छोटा दिखा रहे हैं, but when you stretch it out you will realize कि actual में कितना आपको काटना चाहिए. I hope I'm clear here. अगर आपको ये एरिया पे अगर डाउट है then please don't hesitate to ask me in the comment section. Really, अगर आपको कुछ भी डाउट है, please just leave the question or your doubt in the comment section. I'll try to clear your doubt. तो अभी मेरा पैंट का बैक साइड भी रेडी है. Now I'm going to add a straight stitch on the center front on both side of my front leg piece. तो उसके लिए आई एम मार्किंग ऑन द सेंटर, और उसके बाद आपको फैब्रिक को फोल्ड कर देना है एकदम बीच से. देन यू हैव टू मेक अबाउट 2 mm ऑफ स्टिच. एकदम आपको एडजस्ट पे करना है. यू मेक श्योर यू डोंट ओवर स्टिच, और ज़्यादा फैब्रिक मतलब स्टिच ना करे तो ही अच्छा लगेगा. एंड दिस इज़ हाउ आई एंडेड अप. After this, I'm going to give it a good press so that the stitch it lays down flat. And this is the result. So now I have to make the pockets. For the pocket तो आपको exactly same measurement लेना है, and कुछ ऐसे 2 काट लेना है piece. So here is the result after adding the pocket. तो अभी मेरा front और back side pant का ready है. Now I'm going to place them by facing the right sides together and then stitch them.
तो फाइनली फॉर द वेस्ट बैंड मैंने यहाँ पे अबाउट 6 इंच का वेस्ट बैंड रखा है. आफ्टर फोल्डिंग इट विल बी अबाउट 2.5 इंच. So to make the waistband आपको एडजस्ट में about half inch का fold कर देना है, just like in the video I'm showing you. And also please take precaution while you use heat, okay? Don't be stupid like me. Oh no! So on my trouser I am making my back elastic. So back side will be the elastic waist and the front there will not be any elastic. तो सबसे पहले आपको वेस्ट बैंड को बिना इलास्टिक का फ्रंट साइड पे आपको पहले तो अटैच करके स्टिच कर लेना है. देन बैक साइड के लिए आपको इलास्टिक के साथ आपको स्टिच करना पड़ेगा. So for the back side, you have to make same stitch but this time with the elastic in between the waistband. And here is the result after adding the elastic band. Also remove any excess fabric from the waistband and then close the opening, and we're almost finished with this trouser. So after making the first trouser, it will be a lot easier to understand how I made the second trouser. तो ये black वाला के लिए the procedure is all same, लेकिन जहाँ पे main difference होगा I'm going to explain that portion.
तो अभी तक आपको समझ आ ही गया होगा कि इन दोनों पैंट्स में मेन डिफरेंस इज देयर पॉकेट्स। Fly away to the sky, shining bright like a sunshine, dreaming high like the stars, dancing through